Jai Shri Ram. So we are currently listening to the Ramcharitramanas, Sundarkand, and we have reached in and around a little before Doha number 50. And Doha number 50. And while reading the Sundarkand, what is the end goal of Sundarkand? हमने जब सुंदरकांड शुरू करी थी तब ये बोला था ना कि हम सुंदरकांड रोज चैंट करेंगे एटलीस्ट, ठीक है, हफ्ते में एक बार अभी भी शुरू कर सकते हैं. इट इज दैट पोर्शन ऑफ रामचरितमानस which helps us cross the ocean of mundane existence, right? What is mundane existence? There is nothing mundane in our existence, you'll say, right? कि हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ मंडेन है, कितना कुछ हम कर रहे हैं, ठाकुर जी ने कितना कुछ दिया है. ही इज अ कृपा निधि, वी आर सो ग्रेटफुल. आज का हमें पता है, अभी का हमें पता है, आज का भी नहीं कहना चाहिए, बाद का किसको क्या पता. एंड द थिंग इज, आर being, the true being, not the body, not the mind, not the intellect, is tired of this, life and death, life and death, life and death. Punarapi maranam, punarapi jananam. And when it enters the womb, it cries, because it is like the worst of hells in the womb. कि जब मैं बाहर निकल जाऊंगा, the only thing I'm going to talk about and think about and turn to is you. But the minute the child is born, the being comes out of the womb, the first thing जिसका विस्मरण होता है, जिसको हम भूल जाते हैं, वो है प्रभु. And we get trapped in this beautiful, beautiful web of Maya. Until we die, we are trapped. मोक्ष मरने पे नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिल जाता है. There was this elephant, baby elephant, when it was caught, right? They would tie it and it would try to, free itself from the shackles of that iron क्या बोलते हैं उसको, iron chains, right? But he couldn't. And then as he grew up, he became complacent. Now all that the man had to do was tuck tuck, that make that sound and show the chain, and that's about it. That huge elephant that it had grown up to could not free itself anymore, because the assumption that I am tied was so much ingrained in his or her heart and mind, and so, I won't say soul, heart and mind, that even when it was free, it could just walk and it could break the iron chain. It didn't try anymore. And that is what happens, right? इसीलिए कहते हैं ना, जब बच्चा गर्भ में आए, गर्भ से पहले ही, when any young couple is wanting to have a child, in fact, long before that, the journey towards the divine should be there, because then the conducive environment for that new soul to come in is made, and the beginning is spiritual, right? It is not later, it is not in our old age, it is before we are born that our parents have to start preparing. The land has to be fertile for the seed to grow. And कहते हैं ना कि उपज उतनी अच्छी होती है जितना fertile land होता है. तो barren है land, उसमें क्या आएगा? So the thought over here is, they say कि right now we are so content, we are so happy with our existence, maybe, occasionally also, that we do not think कि crossing the mundane ocean is that important. तो इसीलिए कहते हैं ना, कुंती बोलती है कि मुझे है ना ऐसी सिचुएशंस है ना जिसमें मुझे काफी कठिनाई आए. दुख नहीं बोला, क्योंकि दुखी होना ना होना हमारे हाथ में होता है. क्यों? Because when the situations are not favorable, that is the time when I remember you the most, right? We all ask for favorable situations, but Ma Kunti from Shri Krishna asked for unfavorable situations, because when you become totally helpless, like Draupadi here, or like Vibhishan over here, when he was kicked out by his own brother, in spite of pleading and praying,
And when there was no other shelter, there was nowhere else to go, that is when Vibhishan ji also, Draupadi ji also turned towards the Lord. उससे पहले तो नहीं मुड़े थे ना. तो फिर तो then, instead of praying for situations where people accept us and love us, and situation where the world is all nice and rosy, we should say, may we be shunned by everybody, God, because we are so mood, we are so jad. Till we find solace in even one person, we'll turn towards him. So may there be nobody, to turn to. इसी के बाद तो ये जड़मती आपके पास जाएगी, नहीं तो ये संसार में ही भटकती रहेगी. Scary, right? But क्या करें? That is how we are. And Vibhishan also goes and says, I am tamasic. Till I had somebody, I did not turn towards you. Till I had the belief in my own strength, I did not turn towards you. Till Draupadi had faith in her 5 husbands and her own arm, she did not call out for Shri Krishna. ये है हकीकत. तो है ना, कभी कभी जब ऐसा लगता है ना कि people are going away from us, एक के बाद एक कहते हैं ना कि everybody is turning their face away from us, be very happy. कि probably एक दिन ऐसा आएगा, there'll be nobody else but my Lord to go to and say कि कोई सुनने वाला ही नहीं बचा है, तू ही मेरी सुन ले. And probably that would be the day to celebrate. Right? Scary, but a thought. Anyways, तो विभीषण जी पे पहुंच गए, and we saw how the Lord generously crowned him the king. Right? And beautifully when we ended, we talked about Sharanagati. And Prabhu said कि and even if somebody has committed 1,000,000 crimes, when he turns towards me, that is, a person can only turn towards the Lord when the knowledge or the awareness or the repentance has come in कि मुझसे गलती हो गई. एंड जब दिल से हमारे को एहसास हो जाता है ना, वो गलती गलती नहीं रहती, प्रभु उसको माफ कर लेते हैं. और जैसे एक बच्चा होता है ना, वैसे ही गले से लगा लेते हैं कि तू आजा, चल कोई बात नहीं, हो जाता है. Happens. We tell our children like it happens, don't worry, I am there, come. And then at that time that person is not a criminal anymore. That person is not worthy of hate. That person is not worthy of punishment. So he is saying, until काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, मोह, ये सब हमारे जहन से नहीं जाता है, तब तक we cannot turn towards the Lord. It is not possible. कहते हैं ना, ये दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती. या तो प्रभु रह सकते हैं या विकार रह सकते हैं, दोनों नहीं रह सकते. तो जिसके दिल में truly, not दिखावे के रूप से, there are so many people in the world who show, who we look at to be very spiritual but are not. But truly, if the Lord takes or makes his home in your heart, the other vices can't stay. Slowly and steadily they'll have to leave, because there's only place for one divine. And over here, we'll just revisit one verse and then we'll quickly move forward. Because it's like, jitna bhi hum chaheं to dwell on it, utna hi will go deeper, because there's no end to the ocean of knowledge that Sundarkan is. सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे. राम बचन सुनी बानर जूठा, सकल कही जय कृपा बरूठा. And then this is what सुनहो सखा, then this is what I really want to read. I can't find it over here. सुनह सखा निज कहो सुभाऊ जान. What he's saying is, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभे समय सरन ताकि मोही. Is it possible कि जो चराचर द्रोही है, a person who is mean to a lot, can he ever come towards me? And if somebody has turned towards me, that person is definitely has cleansed himself. जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभाए सरन ताकि मोही, तजहि मद मोह कपट छल नाना, करहु सदा तेहि साधु समाना. And then जननी जनक
Bandhu Sutta Dwara. This is what we did. We did this also where we tie the knots. We take away the knots and we turn towards the threads which are tied with each and every person. We take them, tie them in a thread and we turn it towards the Lord. That does not mean that we break relationships with all the people we love. However, what we do is we see the divinity in each and every one. देखिए, spirituality will never ask us to leave our duties. गीता में भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम छोड़ के भाग जाओ, जहां पे तुम हो वहां कार्य करो, पर डिटैच होके करो. So in the same way he's saying, when he's saying you divert all that love towards me, that does not mean that, you will break relationships with everybody and go, no, there is nowhere to go. It is that we'll start seeing divinity in each and every person. So saying this, he goes on and he crowns whom? Vibhishan the king. विभीषण को राजा बना दिया. जो 10 मात काट के शिवजी से उनने लिया था, वो संकोच के साथ राम जी ने दिया है. बिकॉज ही मस्ट बी थिंकिंग कि am I giving him enough? But he says, Vibhishan says, I don't want anything from the Lord. What happens is, when we turn towards the Lord, we have this desire कि हमें कुछ चाहिए. Normally होता है. But when we totally get engrossed in this divinity, the desire for anything disappears totally. So Vibhishan says कि when I came to you, कुछ इच्छा थी, पर अब नहीं है. But then the Lord says कि now that you have seen me, वो विफल होता नहीं है. मेरा दर्शन विफल नहीं होता. मेरा दर्शन अगर आपको हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा. In spite of the fact there is no desire in your heart. So last week only after we did this, we were doing Gita. Gita में, I think it is verse number 70 or in chapter 2, उसमें बता रहे थे कि जैसे सारी नदियां, all the rivers, they rush to the ocean. The ocean does not need the rivers. The ocean does not dry up when the rivers come. The ocean does not swell when the rivers come or dry up when the rivers dry up. But without its seeking, the rivers flow towards the ocean. वैसे ही, the Lord is saying, although there is no desire to the person who truly, for the world, in the person who truly turns towards me, but अब आप मेरे तरफ मुड़े हो, तो फिर it cannot be void of anything. So he gives Lanka, he gives Bhakti, just like to Prahlad, he gave everything. And he says, कि I am not very sure I am giving you enough. Because for a person who has turned towards the Lord, जब भगवान ही उसके हो गए, तो संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति इनफ हो सकता है क्या? Just imagine, the Lord is his. Everything else is very, very, very mundane after that. तो उनको लग रहा है, वैसे भी हनुमान जी ने तो लंका जला दी थी, तो अब जली हुई चीज उसको दे रहा हूं, सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं. सोचिए, तो जो इतनी तपस्या के बाद में जो रावण को मिला, संकोच के साथ, with a lot of hesitation, the Lord is giving it to Vibhishan. He crowns him the king. Because in spite of the fact that you are an ocean, the rivers gush towards you. वैसे ही, a person who has realized the Lord has reached a point where the Asht Siddhis, Nav Nidhis, all the glory and the fame are dancing at his fingertips. But the hands are joined and the eyes are closed and the vision of the Lord is there, so that person does not want anything. So अगर कोई पूछे कि भक्ति से क्या होता है, भक्ति से इतनी शक्ति आ जाती हैं, पर अब देखिए ना, मीरा के पास क्या नहीं था. वी ऑलवेज गिव अर एग्जाम्पल, राइट? मीरा के पास क्या नहीं था, ध्रुव के पास क्या नहीं था. ऑल दीज ग्रेट सेजेस, इफ यू लुक एट देयर लाइफ, यूल रियलाइज दे हैड सो मच विद देम. ऐसा क्या था जो सब छोड़ के दे रश टुवर्ड्स द लॉर्ड? कुछ तो होगा ना. कहते हैं ना, देयर मस्ट बी समथिंग, कि मीरा ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया and she turned towards the Lord. And she is a living example. She is not even mithya. We cannot negate her existence also. She was there. Her story, whatever we talk about, is a historical fact.
तो डज द क्वेश्चन अराइज इन आवर हार्ट्स कि ऐसा क्या था जो विभीषण ने सब छोड़ दिया, ऐसा क्या था कि मीरा ने सब छोड़ दिया, ऐसा क्या है प्रभु में? क्या जिज्ञासा नहीं होती जानने की? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भी तो जाने, what is this nectar that once you taste everything else loses its sweetness? कि एक बार, एंड कहते हैं ना, एक बार क्षण भर भी if we can taste and feel the nectar that the Lord is, everything else loses its shine. तो ये थी विभीषण की जर्नी. तो he turned towards the Lord, and अब बात कर रहे हैं. So now, after all this, the Lord turns towards विभीषण and says, विभीषण एक थोड़ा सा संकट है अब, जो जिसके नाम स्मरण से ही सारे संकट हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना. राम 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 आप बोल के देखिए, सारे आपके संकट खत्म हो जाएंगे. अब इसका मतलब क्या, हम बार बार समझाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है वो एकदम से वैनिश हो जाएगा, नहीं, उसका आभास हमें नहीं होगा. हमें उस सिचुएशन को सहने की शक्ति मिलेगी. सिचुएशन वैसी ही रहेगी पर दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी. तो यहां पे ऐसे प्रभु बोलते हैं विभीषण को, ये जो समुंदर है ना, इसके पार कैसे जाऊं? अब ही इज द स्ट्रेंथ, राम जी हैज द स्ट्रेंथ टू हेल्प अस क्रॉस द ओशन ऑफ मंडेन एग्जिस्टेंस. इनसे ये छोटा सा समुंदर पार नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो विभीषण भी हंसती है, ही स्माइल, ही सेड, प्रभु दैट इज योर ग्रेस दैट यू आर आस्किंग मी हाउ टू क्रॉस दिस स्मॉल लिटिल टाइनी पडल, है ना. पर अब आपने पूछा ही है, तो लेट मी टेल यू, you know, with your permission, that your bow and arrow have so much of strength that they can dry up the ocean. You know, just a glance of yours can dry up the entire ocean. But that is Niti Virudh, because there are so many lives that sustain in that water, so that is something let's not do. But let me tell you that the ocean was created by one of your ancestors. Raja Sagar की हम कहानी सुनते हैं ना. In the beginning we had talked about Raja Sagar who got Ganga down, and it is said that he and the ancestor had dug the ocean while they were, the long story of Bhagirath, right? तो उसकी ही कहानी है. So actually he is a part of your ancestral history. So why don't you just summon him? तो आप बैठिए और उनको बुलाइए, and आप बुलाएंगे, तपस करेंगे तो आएंगे, and then you can seek. Now this is something that who did not like? Lakshman did not like. Lakshman said, ऐसे कैसे? See, there is something called faith, F-A-T-E, faith, and there is something called F-A-I-T-H, faith. ठीक है? Faith is something called something like destiny, है ना? And faith क्या होता है? हमारा विश्वास. तो लक्ष्मण इज सेइंग, ये मंत्र, ये जो विभीषण ने सिखाया मंत्र न, ये लक्ष्मण बन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा. कि राम जी मान गए कि चलो ठीक है, बैठेंगे, देवों को मनाएंगे, है ना, एंड पूजा पाठ करेंगे तो हमारे मन के अनुकूल जो कार्य वो हो जाएगा. लक्ष्मण बोलते हैं, अरे छोड़ो इसको, उठाओ धनुष बाण, एंड लेट्स जस्ट मेक स्पेस फॉर आवरसेल्व्स. तो क्या बोलते हैं, नाथ देव कर कवन भरोसा. ये देवों पे कौन भरोसा कर सकता है? लक्ष्मण जी बोलते हैं. अब लक्ष्मण जी है ही शेषनाग, सन करते हैं एकदम से, है ना. सिंधु करेयु मन रोषा, सोशिय सिंधु करेयु मन रोषा, कादर मन कहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा. अब बोल दिया लक्ष्मण जी, तो बस कुछ भी सिचुएशन हो फटाफट अपना बोल के निकल जाते हैं. तो बोलते हैं, नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्रीक्स ऑफ फॉर्चून. हम बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो वो हो जाएगा. मेनी पीपल से कि जब डेस्टिनी इज देयर, व्हेन एवरीथिंग इज, यू से देयर आर ब्लूप्रिंट्स, एवरीथिंग इज प्री रिटन, देन पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? आपको पता है क्या आपके क्या लिखा हुआ है? नहीं ना.
आपको पता है क्या नहीं लिखा हुआ? और हमें नहीं पता ना, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। क्या पता आपके पुरुषार्थ करना ही लिखा हुआ हो तो। मीन्स व्हाई वर्क हार्ड व्हेन एवरीथिंग इज प्री रिटन? डेस्टिनी है तो होने दो, जो हमारे किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा। क्या पता आपकी किस्मत में पुरुषार्थ लिखा हो? हमें जब पता ही नहीं है हमारी किस्मत में क्या लिखा, तो हमें पुरुषार्थ तो करना ही है, राइट? We do not know what is written in our destiny. So of course we have to do our best. We have to work. No spiritual seeker is inert. कि हाँ सब तो लिखा हुआ है, मैं बैठ जाता हूँ ना। Everybody is actively working. निष्काम कर्म करे जा रहे हैं। तो ही सेइंग हाउ कैन यू जस्ट प्रे? खुद ही को इतना बुलंद करो। लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को इतना बुलंद करो, उठाओ धनुष, चलाओ धनुष बाण, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। Why should we just come to sit down in prayers and faith? ऐसे ही हुआ था। One person said ना, the God, everything is pre-written. God will take care of you. So he sat down in prayers. He said, I am not going to eat. God is going to put food in my mouth, and so I will sit and pray. अब वो बैठ गए, बैठ के पूजा करना शुरू कर दिया। एंड फिर थोड़े दिन बाद भूख लगी, तो there one person came. He said, why don't you come and work? Gauri, can you please close the door? है ना? Why don't you come and work? And he said, no. God has said he will put food. I'm sure God is going to put food in my mouth, so I'm going to sit. And I'm just going to pray. ठीक है? थोड़े दिन वापस निकल गए. And one person came with a bowl of food. कि चलिए आप खा लीजिए। बोले नहीं, भगवान आएंगे, भगवान ही मेरे को अपने हाथ से खिलाएंगे। शंख चक्र पद्म गदाधारी, पीली पीली धोती पहन के हाथ में मुरली लेके आएंगे, तभी मैं खाना खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। चले गए। ऐसे करके इट जस्ट हैपेंड दैट ही रीच्ड हेवन। और हेवन के भी ऊपर पहुंचे होंगे, क्योंकि हेवन के बियॉन्ड रहते प्रभु। तो बोले कि तुम तो आए नहीं। बोले कितनी बार आया, कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा, कभी काम भेजा, कब तो हिलना ही नहीं चाह रहा था। कितनी बार आके गया, कितने लोगों को मैंने भेजा, कितने बने मेरे निमित्त। सोच। बोला हाँ, तो तुम हिलो ही नहीं, पुरुषार्थ ही ना करो। तो स्पिरिचुअलिटी डज नॉट टीच अस टू सिट इन आवर पूजा रूम्स। वेरी ब्यूटिफुल, बट दैट डज नॉट मीन 3, 4, 5 घंटा दीजिए, पर ऐसा नहीं at the expense of what you're supposed to be doing. The family should not be compromised. Your livelihood should not be compromised. Yes, कंठ में हमेशा राम नाम होना चाहिए. Make a strong spiritual base and then build your material world around it. तो ये बोलने की faith, बस आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, नहीं, लक्ष्मण को नहीं समझ आया. And he's saying कि what is this? Fill your mind. And then, he's saying no. However, लक्ष्मण को नहीं समझ आया. Freak of fortune, no reliance can be placed on the freaks of fortune. Fill your mind and come on, dry up the ocean. हम सुखा देंगे. इतना होना चाहिए जोश अपने आप में कि समुंदर सुखा देंगे सामने आएगा तो. इतना पुरुषार्थ होना चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए. गॉड फेवर्स द बोल्ड, राइट? पर ये नहीं कि हाँ बस दिस इज व्हाट आई सब त्याग दिया. त्याग क्यों दिया? अगर आप में पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है एंड यू हैव द कैपेसिटी टू मेक अ डिफरेंस, गो आउट एंड मेक अ डिफरेंस. बट ये कंठ में राम नाम हो, राइट? एंड हाथ में राम की सेवा हो. सो बट the Lord says, calm down. What is Lakshman saying? Again he says, no, faith is a crutch. Fate, F-A-T, destiny, not F-A-I-T-H. F-A-T, faith is a crutch for the mind of the coward alone. कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था. भाग्य बदलिए ना आप, किसने रोका है ना? कहते हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है मेरी तकदीर. मुट्ठी में है मेरी तकदीर. मैंने किस्मत को वश में किया है. इसलिए कहते हैं ना कि ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है. वो मत करिए. बी वेरी केयरफुल. सो ओवर हियर इज सेइंग फेथ इज अ क्रच फॉर द माइंड एंड कावर्ड्स अलोन. एंड देन ही सेज हु प्रोक्लेम्स देयर फेथ इन फेथ. कौन फेथ? F-A-I-T-H. डेस्टिनी में कौन विश्वास करेगा? मत करो. खुद की ताकत पे, खुद की भुजाओं की शक्ति पे, खुद की मेहनत की शक्ति पे विश्वास करिए एंड कार्य करिए. पर प्रभु बोलते चलो ईज डाउन लक्ष्मण, ठीक है. नाउ लुक एट राम जी. विभीषण आए हैं, ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही हैज कम. ही
he is later on going to give a lot of advice. अभी से अगर हम काट दे कि नहीं हम आपसे कुछ नहीं सुनेंगे, हमारे से बड़ा कुछ है ही नहीं. Normally that is what we do, right? We are not receptive in taking suggestions from other people. Because we think we are know-it-alls. हमें सब पता है, हमें क्या करना. We are very, very great in giving suggestions. But राम जी हमें सिखा रहे हैं कि सुनो, ठीक है, किसी ने आपको सजेशन दिया, करके देखने में क्या जाता है लक्ष्मण. तो बैठ गए, कुश ग्रास है ना, एंड ही सैट डाउन एंड ही वाज प्रिपेयरिंग. एंड उतने में while the entire discussion was happening, Ravan was also not sitting कि चलो ठीक है विभीषण गया छोड़ो कुछ भी नहीं होगा. No, he sent spies कि जाके देखो, विभीषण के पीछे पीछे जाओ, let's figure out what has happened to विभीषण. I'm sure he'll be destroyed, destructed, killed by now. अच्छा खासा जीवन चल रहा था. होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, पता नहीं कहाँ दिमाग खराब हुआ, प्रभु की तरफ चले गए. तो एग्जैक्टली दीज वर्ड्स रावण ने बोला, अच्छा खासा जीवन था, देखो राम के पास चला गया, देखते हैं ना उसकी क्या दुर्गति होती है. सो द स्पाइस केम, बट द स्पाइस गॉट सो ओवरवेल्म्ड, दे वर डिस्गाइज्ड as Vanars, okay? And they were standing and they were witnessing the entire thing. They witnessed Vibhishan being crowned. They witnessed the humility of Ram. They witnessed the power of surrender. They witnessed the love that the Lord showered, the grace. It is like, शरणागति क्या होती है? They were just so overwhelmed कि जैसे कि तपती धूप है. It is so hot. Just imagine the Dubai or the Rajasthan heats at 51, 52. You're standing in the middle of nowhere. And उस समय अगर आपके सर पे कोई छतरी लाके रख दे, या you suddenly find a little bit of shade under the tree, it is like so relieving, right? That is Sharnagati ka peace. And that is what Vibhishan got. This entire world is like so hot. It is like heat waves of taap, tino taap, agony. And when we get Lord, it is as if thandi si chao has come over our head. And that is how it feels. So they are so overwhelmed, they forgot their entire disguise. मतलब कहते हैं ना, सकल चरित तीन देखा. They are hiding, they are watching, and धरे कपट कपी देहा. Again, they are in disguise, they are watching. पर प्रभु गुण हृदय सरही शरणागत पर नहीं. They said कि देखो प्रभु कैसे, and their eyes welled up and they started singing the glories of the Lord, and they left their disguise. In the midst of a tsunami of bears and vanars, these two, both the names are Shukha and Sarika. These are the two demons who had disguised themselves as vanars, and they are not Shukdev ji. Let's not interchange it with this Shukdev ji and Bhagavatam. एक ही नाम कई लोग यूज कर सकते हैं ना. तो Shukha and Sarika, these are the two demons who had gone to find out what was happening, and they forgot their disguise totally. And अभी आपने कभी देखा होगा, the more we walk towards the spiritual path, है ना, when we are on the journey of spirituality, our negativity surfaces. And it is not in a disguise anymore, हमें दिखने लगती है. And during that churning, कहते हैं ना, when the churning of the समुंदर मंथन is happening, सबसे पहले क्या निकला था? That आग निकली, फिर हलाहल निकला. अमृत तो बहुत बाद में निकलता है. So don't get scared. Many times when we are on the path of spirituality, truly dedicated, truly walking, kahin na kahin, during spirituality, when we are walking on the path, slowly, there is a pull. There will be a pull for sitting down and meditating. There will be a pull to sit in the mandir. There will be a pull to go to positive places. The pull will be there. But at the same time, while churning, a lot of halahal will start coming out. A lot of negativity will surface. So much so, aap dekhna, after an intense session of meditation, or if one is very focused during the class, or one is very focused during a session, jaise hi one gets up, the urge to go to washroom happens. Right? Many a times they say, once you have finished an intense session, eat something sweet. Immediately put it in your mouth. To balance it off. So, negative, not only in the body form, but
the negative emotions also surface. So over here, the disguised demons, they just surfaced because of such emotions. So it is just an analogy कि when we are walking on this part of spirituality, सबसे पहले the disguised, the disguised vices are going to surface, and we are going to see it so vividly कि हमें लगेगा कि on the path of spirituality we should become pious. Why are we so vicious right now? Because the churning is happening. तो पहले मल निकलेगा, उसके बाद में अमृत आएगा. Don't get scared. Keep walking, keep walking, keep walking. And we can see it. And as we talked in the Gita session last week, acknowledgement कि yes, these vices are there in me. ये नेगेटिविटी मेरे में है, पूरी जिंदगी निकल जाती है. हम दूसरों की गलती देखते हैं, खुद की गलती मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है. And the beauty of spiritual journey is we are in acceptance of our flaws and follies. कि हाँ, हमारे में ये त्रुटि है, तभी तो उसका समाधान निकलेगा, तभी we are going to work on correcting it. But when we are in ignorance of the flaws in us, how will we work towards correcting it? So this is so beautiful. This is an analogy which can be used. So what happens is they lost their disguise, है ना? And they are there. And the minute they lost their disguise, all the Vanars saw them surrounded by millions of them standing there, and they rushed towards. Sugriv said, बहुत तंग करा था ना तुम लोगों ने हनुमान को, अब दिखाते हैं, काटो इनके नाक और कान. And everybody started moving towards them. So they got so petrified. And during that time, what did they do? They called and cried, जो हमारा हरनासा काना ते ही कौशला धीस के आना. जैसे देख लेना, राम जी सही नहीं करेंगे, राम की दुआई है, हमारे नाक और कान मत काटिए. The minute they said Ram, Lakshman came and Lakshman started laughing. कि देखो, इनने भी राम जी की शरणागति ले ली, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो he said, कहाँ से आए हो, कौन हो? Then they say, हम शुक हैं, सारिका है, ये सब हुआ है, and Ravan has sent us. बोला, okay then, let them go, don't harm them. And he gave a message. Tell this, give it to him, tell him that he's a fool, and his demise is going to happen if he does not surrender, and give us Sita Ma back. With all this, the spies were sent. They were returned. So see, Lakshman ji, when we think about him, he has an aura of a lot of anger and a lot of, he's like, I can imagine him, just imagine. I think he's always red, with his eyes red, his cheeks red, बहुत गोरे गोरे तो हैं ही. And सोचो गुस्से में ही रहते होंगे, पर देखो अभी हंसते हुए भी इतने प्यारे लग रहे थे कि he started laughing. And he is also very forgiving and compassionate. राम जी के साथ कोई रहे तो उनका मानसिक संतुलन हमेशा होता है. But the need of the time, he has to show his anger. And saying all this, they were sent back and they reached Lanka. अब लंका पहुंचे तो Ravan was waiting for them. But they were so overwhelmed by Ramji that they were speechless. Many a times, when something really touches our heart, the first thing that leaves us is our speech. हमेशा देखना, as we walk on the path of spirituality, we should maintain a diary. धीरे धीरे स्पिरिचुअल चर्चा पब्लिक सेटिंग में कम होती जाएगी. आपको मन ही नहीं करेगा. You will say no. It's going to become so personal. The first thing that leaves you is your speech. Because there's no way to express what they had experienced. They were reveling in that experience. Both the demons, they came back. There was no speech. There was just glow. There was just tears. And रावण ने बोला, तुम चुप क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? राम का नाम कभी नहीं लिया रावण में. Those hermits must have run away. The Vanars must be crying and fearing. And Vibhishan so far must have been taken as a prisoner of war. बोलो चुप क्यों हो? So now these both, they joined their hands. Sarika to chup raha, par Shuk, he opened his mouth, Shuka, and he said, please forgive me. Don't get angry. If you really want us to tell you the truth, we will. But kindly don't get angry. We'll tell you as it is what we witnessed. When your brother went, the first thing that Ramji did was crown him the king of Lanka.
and the Vanars you're talking about and ridiculing, let me tell you, remember that one Vanar who came and who destroyed the entire Lanka, who was not tameable at all. Hanuman is the weakest of them all, let me tell you. सबसे जो कमजोर वानर है ना वो हनुमान है. मतलब अब कमजोर वानर हनुमान है तो सोचिए दूसरों का बल क्या होगा. And not only this, the number is uncountable. आप तारे नहीं गिन सकते, वैसे ही कितने वानर हैं आप नहीं गिन सकते. आप कण नहीं गिन सकते, वैसे ही कितने वानर हैं आप नहीं गिन सकते. And each and one stronger than the other. Hanuman being the weakest of them all. My Lord, let me tell you this. And they are just waiting for the orders to come and destroy you. Let me tell you very clearly that each and every one is capable of killing you on their own. अपने आप एक एक वानर इतना मजबूत है कि वो आपका अंत कर सकता है. रावण, अभी भी समय है. आप जानते नहीं है राम कैसे हैं. करुणा निधान, इट इज लाइक जो जलती हुई भूमि पे a drop of water falls, right? And it is like, it is just imagine when it is dry, the droughts of Rajasthan, and तब घन 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 करते हुए बादल आए और वो पहली वर्षा. वैसे हैं राम. He will forgive you. अभी भी समय है. Turn towards him. Turn towards him. And return Ma Sita. But the minute Shuk said, return Ma Sita, the first thing that Ravan did, exactly what he had done to Vibhishan, he kicked him. And जैसे ही उनको किक करा, he said, ठीक है, आपने मुझसे पूछा, I gave you what was there. नल, नील, अंगद, गदा, दधिमुख केसरी, जामवन, सुग्रीव, ऐसे अनेकों अनेक हैं. आप नहीं जीत पाएंगे. पर मेरा फर्ज था, I have told you, now I am going to go. And saying this, he took leave. And it is said that he was cursed by Agastya Muni. That is why he took the form of a demon. The minute Ravan kicked him, the minute he touched Ramji's feet, he got his celestial divine form again and he went back to his ashram. He was a Muni before who was cursed into becoming a demon. रावण को जैसे ही बोलते थे कि मां सीता को दे दो, he would kick. And Shuk left. Think of it. He gave an example of millions and millions of Vanars and Bhalus. Millions and gazillions of them. One more powerful than the other. अब हनुमान जी ने ये नहीं बोला कि हनुमान जी was the weakest because हनुमान जी में तो शक्ति राम की थी ना. हनुमान और राम अलग थोड़ी थे, वो तो एक ही थे, राइट? हनुमान कहते ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा. इतना सब करने के बाद में भी हनुमान शांति से चुपचाप बैठे रहते थे. नो ओपिनियन, नथिंग. दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हनुमान जी. Probably, sometimes this kind of a strength comes out as a weakness. जो इंसान चुप रहता है, शांत रहता है, ज़्यादा बखान नहीं करता, we should never make a mistake of taking him as weak. Right? Anyways, but this was all said in good spirit. But if you think of it, what he is saying is so many of them, right? And ऊपर से उनके प्रभु राम. And the thought that came is, just imagine, gazillions of thoughts. Now, gazillions is not a number the children normally tell me, but it's okay. It is just an analogy to explain कि कितने सारे वानर होंगे. So many of them, and ऊपर से राम. तो ऐसा नहीं है कि all those thoughts, all positive thoughts, with Ram ji over it, जो हमारी सारी thoughts हैं पूरी positive, क्योंकि राम जी ने अंकुश कर रखा है. And उसके आगे, that 10-headed Ravan, the mind with its 10 indriyas, is surely going to be defeated. Come to think of it, thoughts unimaginable in number, and who has control over them? Who is leading them? Ram. So all our thoughts, when they become so powerful,
and positive, the mind becomes weak. कहते हैं ना कि मन कमजोर हो जाता है, मन हमारे को और नहीं चला सकता. It is not a leader of us anymore. मन किसको चलाता है? सारी इंद्रियों को, right? All our senses are run by the mind, right? But if this mind has only positive thoughts, it will become helpless and we'll never do anything negative. So it is saying these thoughts, the tsunami of thoughts, the tsunami of Vanars, with Ramji over it, can defeat you. Each and every positive thought, one positive thought, कहते हैं ना कि आप एक सत्य का साथ ले लीजिए. अगर आपने बोला कि मैं सत्य ही बोलूंगा, right? One thing, we should have a principle. We always carry our phones, right? And we always look at our phones. Probably here behind, we should write that one principle that we will follow no matter what. Even if somebody holds us at a gunpoint, we are not going to sway from that. Maybe it is Satya, Swachya, जो भी आपको लिखना है. Maybe honesty. One principle, hold on to it. With that one principle, all the other principles will follow. It is like एक छोटा सा दरार जब आती है ना, छोटा सा आपने होल भी कर लिया ना, धीरे धीरे the entire set of virtues will come in. But then the thought is that you do not compromise on even one. So he's saying even one of the Vanars can destroy you, Ravan. Even one positive thought, if we hold very close to us, ज्यादा कुछ नहीं होता. यम नियम संयम तप जप कुछ नहीं होता. कुछ भी हो जाए, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगी. I'll be honest, even if it means that I end up losing everything. Stand on to that virtue and dekhna, the mind will become powerless and all our indriyas will be in our control. Just one. So ye keh rahe na, only one positive thought can defeat the mind. And the thought and the mind is a battle. Hamesha dekhna, the soul is always pure, right? The battle is going on and the soul is always pure. So all he's saying is, Sahaj asur kapi bhalu sab, puni sir par prabhu ram, Ravan kal koti kahu, jeet sakei sangram. They are saying all the monkeys and the bears are born warriors, and besides that they have Lord Shri Ram over their head. Ravan, they can conquer in battle even millions of yams. They can win this battle. We are warning you. Ye keh ke Sukh left. चले गए. Now, Ravan is still trying to understand what just happened. And यहाँ पे Sri Ram has already taken seat. He is sitting and he has started praying to the ocean कि please आप मुझे रास्ता दीजिए. देखिए ना, he had the strength, he had the power, but he had the humility. Power does not actually Power should never be used to create any destruction even when it can. He had the ability, but agar without using my power, with a positive way, things can be accomplished. Why not? Isikliye kehte hain na, power in the hands of the wise is blissful, and power in the hands of the wicked can be destruction personified. Now power in the hands of Ramji is so soothing. वो बैठ गए, कुश का आसन लगाया, all the grass. He's sitting there, Sri Ram, the creator of the three worlds, sitting with his hands joined in front of the ocean, seeking the ocean to give way. कि मुझे उधर जाना है, please रास्ता छोड़ दीजिए. 3 दिन निकल गए. बिने न मानी जल निधि जड़, बिने न मानी जल निधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति. 3 दिन with a lot of patience he tried, and then he said कुछ नहीं होता. And this is कलयुग में भी ये है ना कि डरता इंसान किससे? नम्र व्यक्ति से नहीं. If somebody is humble, somebody is namra, somebody is kind, people overpower him. They don't listen to him. But if somebody is arrogant, you're scared that he can harm us, you'll follow whatever he's saying. तो he says कि भय बिना प्रीत नहीं होती. जहाँ डर होता है ना, वहीं पे हाँ जी आप बहुत अच्छे हैं, जी हजूरी होती है, सब काम होता है. पर जहाँ डर नहीं होता वहां कोई पूछता ही नहीं है. राम ने बोला छोड़ो, लक्ष्मण लेके आओ. 3 दिन से प्यार से समझा रहा हूं,
कुछ तो आइए, बात करिए, रास्ता दीजिए, आपको समझ नहीं है ना, बोले राम सकोप तब। उनने एकदम, मतलब राम जी को गुस्सा बहुत कम आता था, इस समय आ गया, बोले एकदम गुस्से में बोले कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप विदाउट इंस्पायरिंग फियर, देयर कैन बी नो लव विदाउट इंस्पायरिंग फियर, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड. That is the reality of today's world, where there is fear. When you're fearful of somebody, you follow that person, you're gracious to that person, you're kind to that person. But when there is no fear for somebody, nobody cares. Right? So ye keh ke, and then Ramji again is, no, Lakshman is very happy. वो तो तुरंत जाके, he was standing with the bow and arrow, कि 3 दिन से भगवान जाने हैं राम भैया क्या कर रहे हैं, and he immediately handed it over. And then Ram said, and beautiful words, and this is worth noting for all of us, Sat sana Vinay, Kutil sana Preeti. This is after Doha number 57. Sahaj Kripa sana Sundar Niti. So what does it mean? Again, he says, Lakshman, bring me my bow and arrow, I will dry up the ocean. And supplication before an idiot. Sorry for the word. Sat sana Vinay. When when a person has, the word they have used is sat, जिसमें बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, उससे आप विनय करे जा रही हो, रिक्वेस्टिंग, इट वॉन्ट वर्क, राइट? व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग जिसमें समझ ही नहीं है, तो उससे रिक्वेस्ट करके आप क्या कर लोगे? एंड कुटिल संप्रीति, फ्रेंडशिप विद अ रोग, फ्रेंडशिप विद अ विकेट पर्सन, इट इज नेवर गुड, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड मेक अ नोट ऑफ. एंड देन इज इट सहज कृपासन सुंदर नीति, इनकलकेटिंग, है ना, लिबरलिटी ऑन अ बॉर्न माइजर. And if somebody is a miser and आप उसको सुंदर नीति बता रहे हो, you are giving him good counsel. A person who does not have any virtue, you are giving him good counsel. It is like talking to a pot which is kept upside down, pouring water in a pot which is kept upside down. And then talking wisdom to one steeped in worldliness, talking about giving to a miser, talking about wisdom to a person who is steeped in worldliness does not make sense. ममता रत सन ज्ञान कहानी. अगेन ममता, जब हमें संसार से ममता है, many a times we use the word ममता as very beautiful, right? मुझे तो मेरे बच्चों में ममता है, ममता है. ममता सबसे खतरनाक चीज होती है, सब कुछ चला जाता है, माँ की ममता नहीं जाती, राइट? ये रह जाती है ममता. मतलब आई वुड से ममता तो अटैचमेंट होती है, प्यार कम होता है उस ममता में. सो व्हेन अ पर्सन हैज सो मच ऑफ लव towards the world, there is no point giving him or talking to him about wisdom. There is no point talking about giving to a miser. In the same way, there is no point talking to a person who's so attached to the world and worldly things about wisdom. कोई मतलब नहीं है, it is wasting time. इसी के लिए कहते हैं ना, हर जगह अपने ग्रंथ खोल के मत बैठो. अति लोभी सन बिरति बखानी, this we have covered. क्रोधी सम कमी हरि कथा. Again, क्रोधी some or kami some hari katha. A person who is desirous of, lust, there is no point reciting the hari katha in front of him. And discourses about the exploits of the Lord should not be given to a person who is totally irascible. बोले जा रहे हैं ना, the Lord is very angry. He's saying कोई मतलब नहीं है. It is like sowing a seed in barren land, right? So these 3-4 verses we can write: Sat sam vinay kutil sam preeti, sahaj kripan san sundar niti, mamta rat san gyan kahani, ati lobhi san virati bikhani, krodhi sam kami hari katha, usar beej bae fal jata. It's of no use. Don't waste your time. कहते हैं ना कि दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल व्हेन वी ओपन आवर माउथ. कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमें सोच समझ के करनी चाहिए. टाइम इज प्रेशियस, आवर एनर्जी इज प्रेशियस, राइट? नेवर 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 बी वेरी वॉचफुल. ये कह के, नाउ द लॉर्ड इज वेरी एंग्री. ही फिटेड हिज एरो ऑन द बो, एंड व्हाट डिड ही डू? ही वाज अबाउट टू शूट the arrow when the god of the ocean came up. See, this is so beautiful. I never knew about this, but it is said that till you cut the banana tree
राइट, ऊपर से तब तक फ्रूट्स नहीं देती. आई डो नॉट नो हाउ ट्रू इट इज. कोट ही पई कदरी फल, कोटि जतन कोई सींचे. कितना ही आप सींच लो, till you cut it, though one may take infinite pain in watering a plantain, it will not bear fruit unless it is hewed. That is what they are saying. Similarly, mark me, O king of birds, Kagbhusundi, because the dialogue of Ramayana is happening between Shivji and Parvati and Kagbhusundi and Garud also. A wild fellow heeds no prayers but yields only when reprimanded. कहते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. In a very crude manner, that is what they are saying. And he comes, he joins his hands. He said, देखिए आप ऐसा मत करिए, आप तो कृपा निधि है, करुणा निदान है, राइट? और मैं कौन हूं? मैं तो जड़ हूं. All the 5 elements are जड़, right? So I am जड़, I am water, I am the water element. तो मेरे को ईथर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है, all these, एयर है. It is not जड़, right? I am जड़. So I did not understand what you are saying. Plus, I am bound by the rules of nature. There are so many surviving on the water. If I dry up or if I give way, what will happen, Prabhu? But even if that is what you want, that can be done. वो मैं कर सकता हूं. पर क्या ये उचित रहेगा? Is it right? But if that is what you want, I'll do it. Now he has joined his hands and he's talking to the Lord. He's talking about how जड़ पदार्थों में, it is जड़, there is no विवेक देयर. ही सेइंग मेरे में विवेक नहीं है, मुझे नहीं समझ आई ये बात, आप क्षमा करिए मुझे. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वर्स विच हैज कम अप. तो मैं कल काफी देर से चिंतन कर रही थी. फिर मैंने बोला दिस वर्स इज नॉट वर्थ डूइंग एनी चिंतन, बिकॉज हु इज टॉकिंग, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. व्हेन अ प्ले इज बीइंग डायरेक्टेड, अब ये विलन बोल रहा है या फिर ये भगवान बोल रहे हैं या फिर ये रावण बोल रहा है, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, वेर एवर द लॉर्ड इज स्पीकिंग वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट, राइट? बट वेन द लॉर्ड इज नॉट स्पीकिंग, वेन देर इज लाइक समथिंग विच इज, वी स्लोली जस्ट गो अहेड. नाउ दिस वर्स, आप लोग सब सोच रहे होंगे, दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वर्स एंड पीपल डिमीन द एंटायर रामायण जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्स. ढोल गवार शूद्र अरु पशु नारी सभी ताड़ना के अधिकारी. नाउ दिस वर्स इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि ऐसे कैसे तुलसी बाबा ने लिख दिया. तुलसी बाबा इज टॉकिंग अबाउट अ डायलॉग एंड व्हाट इज, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज दिस वर्स बीइंग सेंट इज, सबसे पहले द ओशन सेड कि मैं जड़ हूं, राइट? मैं जड़ पदार्थ हूं, मेरे में इतना विवेक नहीं है. तो जब ये विवेकहीन बंदा, विवेकहीन व्यक्ति, विवेकहीन ओशन ये बात, समुद्र ये बात बोल रहा है, तो हमें इस पे विचार ही नहीं करना चाहिए. तो इतनी जो कमेंट्री, इतना जो डिस्कशन हो रहा है कि ढोल गवार शूद्र अरु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब कि ढोल, जो ढोल होता है, राइट, द इंस्ट्रूमेंट, गवार जिसमें बुद्धि नहीं है, शूद्र बोल दिया इन लोगों ने, शूद्र, देर आर डिफरेंट वर्ण है तो इनने एक शूद्र का नाम ले लिया. पशु, एनिमल्स, एंड नारी, नारी तत्व भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है, विमेन. सकल ताड़ना के अधिकारी. अब ताड़ना के भी अलग अलग वर्ड है, इंस्ट्रक्शन, हिटिंग, गिविंग कमांड और वॉचिंग ओवर, राइट? बट इज इट वर्थ स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वर्स? नो, बिकॉज what they have said, the ocean has said it. Neither तुलसी बाबा, ना हनुमान जी, ना राम जी, ना लक्ष्मण जी, ना भरत जी, ना जामवन, कोई भी विवेक वाला व्यक्ति तो यह बात बोल ही नहीं रहा है रामायण में. तुलसी बाबा ने यह डायलॉग करा है, कौन बोल रहा है? द ओशन इज स्पीकिंग. ओशन हैज क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी जड़ एंड विवेकहीन बिकॉज ही इज जस्ट अ तत्व, राइट? देयर इज नो विवेक इन इट. And so when somebody Vivekhin is making this line, it is not worth discussing or maligning us entire scripture. So whenever we are saying something, we have to look at the context. हम ऐसे ही इस वर्स को उठा लेंगे ना, somebody will just pick up this verse, right? And then they will start saying कि देखो आपके रामायण में तो ये लिखा हुआ है. तो then we should say रामायण में जरूर लिखा हुआ है, पर कौन बोल रहा है? समुंदर बोल रहा है. समुंदर ने क्या बोला? मैं विवेकहीन हूं, मैं जड़ पदार्थ हूं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है. तो जब कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो इसके ऊपर समय व्यर्थ क्यों करना है, राइट? सो वी विल नॉट डिस्कस इट एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, देयर इज नथिंग वर्थ
talking about it. So he said this, and finally he said, ठीक है. तो राम जी ने बोला, ओके, जो भी तुम बोल रहे हो सही है, तो अब हमें उस पार जाना है. हम कैसे जाएं? How should we cross the ocean and go to the other side? So then he says कि आपके जो वानर सेना है ना, उसमें दो वानर है, नल एंड नील. They have the ability to make these stones float, right? So you ask them to build a bridge over me. I'll make sure I help you hold on to that bridge. And with this work together, we will form a setu across. It is going to talk about your glory, and you will be able to reach Lanka. And saying this, the Lord said, okay, tathastu, हम ऐसा ही करेंगे, आप हमारी सहायता करना. Saying this, the ocean joined his hands and took leave of the Lord. Prabhu, वहाँ, and Ram and Lakshman also went back. The ocean went back, and next day they would start and cross by making a Ram Setu across the ocean. And they say the gods presiding over the ocean left for his home. Nich bhavan agavane Sindhu Shri Raghupati ye mat bhayahu. कि ठीक है, जो आपने बोला मुझे समझ आ गई ये बात, हम ऐसा ही करेंगे. The idea of bridging the ocean commended itself to the blessed Lord of Raghus. The story, अब ये कह रहे हैं कि जो ये कथा सुनता और बोलता है, right? Whatever has been said, whenever you listen to this entire discourse of how Sri Hari got to the other side of Lanka or Sundarkand, what is taken away? It wipes out the impurities of Kali age. What are the impurities of Kali Yuga? Klesh. Kala, always हमारा मन क्लेशित रहता है. आप देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ there is always. तो कलयुग में क्लेश, कलयुग में ताप, कलयुग में वो that impurities of Kali age, all the vices will be taken away. And तुलसीदास जी बोलते हैं कि whatever little wit I had, अब तुलसी बाबा ऐसे बोल रहे हैं तो हम कौन है, हमारी तो मति कुछ भी नहीं है कि whatever little knowledge, whatever little vivek, whatever little wit I had, I have tried my best in my childlike language to explain, right? You're saying whatever sung by Tulsi according to his own poor light, I have explained the entire thing. And then what happened? The excellence of Sri Ram is the abode of delight, and for all doubts, unfailing remedy for sorrow. A remedy for all doubts and sorrow, and therefore giving up all other hope and faith, ever sing and hear him, O foolish mind. Taji sakal as bharos gavahi sunahi santat satmana. Leave everything. कहाँ मन भटक रहा है, सब छोड़ो. When we have the opportunity to sing the glories of the Lord, why? When we have the opportunity to see the beautiful face of the Lord, when we have the opportunity to go to the Lord, why should I go elsewhere? Why should my eyes wander, ears wander, mouth wander? Why should my feet go elsewhere? Satmana, matlab what? A foolish mind. Why are you wandering from here to there? प्रभु में मन लगा लो ना. And he says कि whoever listens to this glory of Sri Ram, listens to this katha of Sri Ram, रघुनायक गुणगान जो सुनता है, and मन से सुनता है, ऐसा नहीं कि you're just listening to it superficially. When you're there and your entire being is immersed in the nectar of devotion to Sri Ram, तब पता है क्या होता है? Without any effort, we are able to cross the ocean of mundane existence. Sindhu bina jal jaan. क्या? सादर सुनहि ते तरही भव, Sindhu bina jal jaan. Then what is the problem? We should question ourselves. If it is so easy, इधर उधर क्यों भटकता है मन मेरा? राम में मन लगा लेना.
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.